lecture, we will talk about conditional sentences. And what is conditional sentence? By the name we understand the conditional sentence consists of a condition. A conditional sentence is built on the word if. And the word if is very important word in English language because it shows us condition. There are always two parts to a conditional sentence. कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास दो क्लासेस होते हैं और दो पार्ट उसके होते हैं. वन पार्ट बिगिनिंग विथ एफ. एक पार्ट उसमें ज़रूर एफ होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, लेकिन एफ पार्ट होगा टू डिस्क्राइब अ पॉसिबल सिचुएशन, जो कि हमारे साथ एक पॉसिबल सिचुएशन हमें बताता है कि ये मामला है. एंड द सेकंड पार्ट विच डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेस, और दूसरा उसका जो रिजल्टेंट क्लास भी हम उसको कहते हैं. वन इज एफ क्लास, कंडीशनल क्लास, एंड द अदर इज रिजल्टेंट क्लास विच टेल अस द रिजल्ट ऑफ दैट. अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट. सो इफ इट रेन्स इट्स अ कंडीशन, इट इज अ सिचुएशन. अगर बारिश होती है वी विल गेट वेट, तो हम गीले हो जाएंगे. So it is the resultant of this if condition. There are four types of conditional sentences. English में हमारे पास चार किस्म के conditional sentences है. एक को हम zero condition कहते हैं, दूसरे को हम first condition कहते हैं, और तीसरे को हम second condition कहते हैं, और चौथे को हम the third condition कहते हैं. Number first is the zero condition. The zero condition, by the name we can understand there is no condition. We use the zero condition to talk about permanent truths. जब हम permanent truth के बारे में बात करते हैं, such as scientific facts, जब हमारे साथ scientific facts हो या general habits हो, the structure is simple. Here are some example. You can understand that if you heat water to 100 degree, it boils. It is a fact, but you can understand the structure as well. In both class we use present simple tense. In both class we use present simple tense. If you eat a lot, you put on weight. So here there is zero condition and it is fact as well. And the both clauses we use in a present simple tense. For a zero condition, we use both class in a present simple tense. Now we have the first condition, which is actually the second condition, but the name is, if there is zero condition, there is no condition, so we do not give it a name. But now we have a first condition. In the first condition, we use the first condition to talk about a realistic situation. हम बिल्कुल रियल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं इन द प्रेजेंट और फ्यूचर. इफ यू आर फ्री वी कैन गो फॉर अ वॉक. सो व्हाट यू कैन से, इफ यू आर फ्री वी कैन गो फॉर अ वॉक. सो वी यू कैन यूज कैन, must as well, but the basic structure for the first condition is that in F class we use what? In F class we use present simple and the resultant class we use future simple tense. ये बात आपने जरूरी याद रखनी है. If you are free we can go for walk. If he studies hard, let's see, he will do well in the exam. It's a real condition because if he study hard, he will do well in the exam. He will do well in the exam. He will call if he needs help. यह स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा डिफरेंट लिखा. ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपके साथ रिजल्टेंट क्लास हो, फिर उसके बाद कामा नहीं लगता है, फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं एफ वाले क्लास को if he needs help. He will call if he needs help. तो इस दो स्ट्रक्चर में सिर्फ फर्क है कि जब आप इफ क्लास पहले लिखते हो तो इफ क्लास के बाद आपने कामा लगाना है और उसके बाद रिजल्टेंट क्लास
लिख लेनी है। The second condition. We use the second conditional to talk about improbable or impossible situation in the present or future. हम जब improbable और impossible situation के बारे में बात करते हैं तो हम second conditional को इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। if क्लास में हमारे पास if प्लस past simple tense इस्तेमाल होता है और जो रिजल्टेंट क्लास हमारा होता है उसमें हमारे साथ ओल्ड प्लस वर्ब या कोड प्लस वर्ब इस्तेमाल होता है। If I had more time, I would exercise more. If I had more time, I would exercise more. It's mean, but I don't have more time, so I don't. If I were rich, I would spend all my time on traveling. So it means, but I am not rich, so I can't. तो इसका मतलब है कि मैं अमीर नहीं हूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ। So the second conditional tell us about the improbable or impossible situation. The third conditional, we use the third conditional to talk about impossible situation. जब हमारे पास कोई बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन हो, जो कोई चीज़ हुई भी नहीं हो और हम उसके अगर ऐसा होता तो इस तरह होता और हम ये सारी बात पास्ट में ही करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो एफ और पास्ट परफेक्ट जो है इस कंडीशनल सेंटेंस में आ जाता है और उसका जो दूसरा क्लास होता है कंडीशनल क्लास में, रिजल्टेंट क्लास में वुड हैव और कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम। इफ यू हैड नॉट फॉरगॉटन हर बर्थडे शी वुड नॉट हैव बीन अपसेट। इफ वी हैड नॉट लेफ्ट अर्लियर, तो ये अगर आप सोचिए तो एक किस्म का रिग्रेट भी हमारे साथ शो करता है कि हमने कुछ नहीं किया होता है और फिर अगर हम कहते कि हम उस तरह हमने क्या होता था तो अब उसका उस वक्त वो रिजल्ट होता। तो ये हमारे साथ थर्ड कंडीशनल सेंटेंस थी एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।